Hello student, in last lecture we have been studying about the system surrounding and boundary. उसके बाद में open system, closed system, isolated system. Now on the basis of a phases, again there are two types of system. One is called a homogeneous system and another one is called a heterogeneous system. तो होमोजीनियस आपके ख्याल में आ जाएगा, होमो यानी सेम, हेटेरो यानी different. A system which is uniform throughout, that is contain only one phase, called a homogeneous system. Very common example, that is the mixture of a nitrogen and oxygen या फिर air, या फिर very common example, that is the mixture of a two miscible liquid, that is the milk and water. Such systems are called a homogeneous system, that is which are uniform throughout या फिर contain only one phase. Heterogeneous system that is contain two or more phases, that is not uniform throughout, called a heterogeneous system. जैसा example, that is the mixture of a two immiscible liquid, that is the oil and water, which is not uniform throughout, या फिर mixture of a two solid, that is the sand and iron particle, belongs to the heterogeneous system. तो फिर से ख्याल में रखने का, homogeneous system which is uniform throughout, contain only one phase. Heterogeneous system which is not uniform throughout या फिर contain two or more phases. तो ये हो गया about the system के लिए. उसके बाद में now the properties. There are two types of properties. One is called extensive properties and another one is called intensive properties. Extensive properties or intensive properties. What is mean by extensive property? Extensive property का मतलब a property which depends on the quantity of a matter. A property which depends on the amount of a matter present, that is called a extensive property. जैसा for example mass हो गया, volume हो गया, area, these are depending on the quantity of a matter. उसके साथ में some thermodynamic functions like work done या फिर heat या फिर internal energy या फिर enthalpy या फिर that is the entropy या फिर free energy. तो इसके मीनिंग अपन बाद में देखेंगे. तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, वर्क डन हो गया, हीट हो गया, उसके बाद में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी या फिर एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, दिस ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी which value depends on the quantity of a matter. अगर मैटर क्वांटिटी चेंज होगी तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है. Now intensive property, a property whose value independent on, a property which does not depends on the quantity of a matter, whose value does not depends on the amount of a substance present in a system, such is called a intensive property. जैसा for example, जैसा डेंसिटी हो गया, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर विस्कोसिटी या फिर सरफेस टेंशन या फिर दैट इज द नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिलोंग्स टू दिस क्लास. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी which is independent on the quantity of matter, called intensive property. जैसा फॉर एग्जाम्पल, जैसा समझो वाटर लिया अपन ने, 100 ml वाटर इज टेकन, बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा 100 डिग्री. अब समझो इसमें से अपन 10 ml वाटर लिया तो 10 ml वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा 100 डिग्री. दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर. सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ख्याल में रखने का, रिमेंबर इट, दैट इज when the extensive property is divided by another extensive property, then the new property becomes intensive. जैसा for example mass upon volume, दोनों भी extensive property है. The new property density, that is it is an intensive property. या फिर अगर intensive property है, intensive property is divided by intensive property,
the new property becomes extensive. अब इसमें और दो पॉइंट याद रखने का, प्रेशर। अब प्रेशर दो टाइप के लेते हैं अपन, एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा लेते हैं अपन प्रेशर ऑफ ए गैस। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन या फिर ड्यूरिंग द compression, pressure of a gas changes, that is it depends on the quantity of matter. तो ख्याल में रखने का, pressure of gas it is considered as an extensive property, लेकिन atmospheric pressure remain constant। पता है अपने को 1 atm pressure, it belongs to the intensive property, it belongs to the intensive property। तो ये दो पॉइंट ख्याल में रखने का। Again one more important point concerning with the extensive and intensive property, जैसा फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी किस में लेंगे अपन, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव में। जैसा फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीन बाय हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ ए हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। That is the amount of heat is required, needed to increase the temperature. Suppose the 29 degree to 30 degree, that is called heat capacity. That is its value depends on the quantity of matter. So the heat capacity it is an extensive property. लेकिन अगर यही समझो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे अपन या फिर वी कैन से मोलर हीट कैपेसिटी, तो दीज टू बिलोंग्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। यहाँ पर यूनिट मास दिया है 1 ग्राम। molar heat capacity में the amount of heat is required to raise the temperature of a 1 mole of a substance through 1 degree Celsius या फिर 1 Kelvin। तो यहाँ पर भी mass fix है 1 mole। तो any property which is taken in a unit mass it is considered as an intensive property। तो ये दो पॉइंट ख्याल में रखने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। extensive divided by extensive, the new property, intensive divided by intensive, the new property, extensive, the atmospheric pressure, intensive property, while the pressure of a gas, extensive property, heat capacity, this is an extensive property, लेकिन any property which is expressed in a unit mass like the specific heat capacity या फिर molar heat capacity, that belongs to the intensive property।